बेटी को लूट दिया, मार डाले। अरे मेरे को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। मेरा साथ दे दीजिए, मेरी बेटी सुन लीजिए, मेरी बेटी सुन लीजिए, और दिला दीजिए मेरी बेटी को। Good folks, third charan in UP, Yadavland, first and final charan in Punjab, lots at stake. Third charan, make or break for the BJP and make essentially for Akhilesh. What's happening here, right? While that's happening, you got to worry. This guy says, oh, nationalism, bloody Home Minister, 2 army men, terrorists killed in Shopian, nobody's looking at that. India is your home, says PM. I mean, he's obviously loves his fancy headwear. Democracy in India has taken deeper roots, says Jaishankar. Thank God to Nehru for that. And Ambedkar, BJP, what was Tipu doing with terror convicts? Dad, SP has links with kin of Gujarat serial blast case convict Thakur. I had warned you yesterday that this was going to happen. 38, first, it's an obscene number of people. Timing was absolutely, it was a serious coincidence. And then, Anurag Thakur, the guy, Goli Maar Do Wala guy, right? And he's a Minister for State for Finance. Right? This is the kind of guys we got, right? Akhilesh's poll fate and focus as UP votes in Phase 3 today. All eyes on non-Yadav OBCs. The X factor in UP's Phase 3 sure is. With Swami Maurya, Patel, everybody on Akhilesh's side, he's got a chance. As BJP eyes a hat-trick in Jhansi, lack of jobs resonates on the streets. At UP rally, Rajnath faces angry slogans over jobs. The entire Jatland is angry with him because of no bharti in the army. Rajnath Singh nailed him, but apparently he had to run, cut short his speech. In Bundelkhand, stray cattle creep up on BJP as farmers tire of options. And guess what the Pradhan Mantri suddenly has come up with? Some Gobardhan, sirs. If you fall for that, you can fall for any crap, pun intended. Ahead of civic elections, BJP looks for an image makeover with social media push. Difficult in Delhi. Shah launches attack on Gandhi family for Bastion, Rai Bareli. Good luck, Shah. चाहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि पंजाब के जो आंकड़े हैं ये लेकर के आइए कि आईएनसी, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, अदर्स, इन सबके खाते में किसके पास कितनी सीटें आ रही हैं, ये जरा फटाफट लेके आइए। देखिए स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं सामने। कांग्रेस 63 से 65 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार बन रही है, यानी रिपीट हो रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। पंजाब में 63 से 65 सीटें, आम आदमी पार्टी 30 से 32 सीटें यानी हाफ है, और शिरोमणि अकाली दल 17 से 19। यहां शिरोमणि अकाली दल को बढ़त देख रहे हैं हम, अगर हमारा पुराना आंकड़ा आप याद कीजिए तो। और बीजेपी 1 से 3, जबकि अदर्स के खाते में 1 से 3, यानी कि अदर्स और बीजेपी लगभग बराबर, लेकिन यहां मुख्य लड़ाई में रहता है। देखिए पंजाब जैसा कि लोग देख रहे हैं कि मालवा, माझा, दोआब, ये तीनों सेक्शन में जो बटी हुई है, उसमें कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो तीनों सेक्शन में उपस्थित है। जो बाकी जो पार्टियां हैं उस रूप में उसकी मौजूदगी तीनों जगह पे नहीं है। ये सच है कि आम आदमी पार्टी ने मालवा में एक तरह से जो है कि उसने वहां पे अच्छी खासी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन क्या केवल मालवा में अपना बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज करा के 69 सीट्स है वहां पे,
तो क्या उस पूरे सीट्स को वही जीतेंगे? क्योंकि देखिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा कर दी गई है, उन्होंने 111 दिनों में जो पूरी राजनीति की है, उन्होंने जब से वो पद पे संभाले है उन्होंने, तो उनका जनता के साथ कनेक्टिविटी और उनके तमाम तरह की चीजें, कहीं कहीं कांग्रेस अब तक नुकसान की स्थिति में थी कि वो एक तरह से चन्नी के नाम को घोषित नहीं कर रही थी। उनके नाम की घोषणा के बाद स्थितियां जरूर जो है कि वो हमें तो लग रहा है कि जो आपका संख्या है ये इसमें हो सकता है कि कुछ एक दो जुड़ी जाए, वो घटेगा नहीं, क्योंकि देखिए पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का है, जैसा मनीष जी कह रहे थे कि राहुल जी कह रहे थे सॉरी, कि आम आदमी पार्टी का बैलेंस नहीं है। यानी उनको पिछले चुनाव में अगर आप देखिए तो अकेले उनको मालवा में कुल 20 सीटें आई थी और मालवा में 18 सीटें थी, माझा में 0 थी और दोआबा में 2 सीटें आई थी। तो क्या पिछले 5 साल में उन्होंने ये मेकअप कर लिया है? मुझे नहीं लगता कि वो तीनों पंजाब के रीजन्स में वो बराबरी से आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपका सर्वे है ये बहुत हायर साइड है। दूसरा कि कांग्रेस का जो चन्नी के डिक्लेयर होने के बाद, क्योंकि आपका जो सर्वे है, जाहिर सी बात है कि चन्नी का नाम कल ही आया है, ये सर्वे थोड़ा पहले का होगा, कुछ दिन पहले का होगा, उसका असर नहीं दिख रहा है। लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप तय हुई, उसका असर इसमें दिख रहा है। और अगर भगवंत मान का नाम नहीं आता तो शायद ये फिगर आप नहीं दे पा रहे थे, आपका सर्वे ये नहीं लाता। मुझे लगता है कि चन्नी के आने के बाद एक क्लैरिटी पंजाब के अंदर होगी और ये जो फिगर है आपकी, ये मैं मानूंगा कि ये लोअर साइड फिगर है। Now for Punjab, folks, and here the big thing as you hear is the Punjab puzzle. In a fierce multi-cornered fight in Punjab, AAP has posed a monumental challenge to Congress and SAD, captures the mood of the state that goes to polls today, totally. And one of the big things here was the captain's breaking away, forming his own party and going with the BJP. Unfortunately, मैं इत्थे कहांगा ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ। And now, as when you hear something like this, many BJP supporters like us are happy because of the separation from SAD. Last time BJP suffered because of Akalis. In the next 5 years, BJP will be able to stand on its own. So the captain's party has allowed these guys to take seat. And what has happened is, as when the Akalis, they were limited, it's I guess right, to 1 or 2 seats, and they weren't allowed to get out of there, right? But you gotta worry about the RSS, what it thinks about Sardar. It's not hunky-dory. RSS, yeah, as long as you're part of the RSS fold, you're okay. But they also seriously get hurt when all the Sardars and the accolades that are given to the Sardar community globally. They actually don't like it, folks. So what do we have here? Rahul names Chani as CM face hails Sidhu. This is starting captain shrunk Congress hopes Chinese parties change card. Captain faces unusually tough election. Bhagwant Mann rides up wave in Duri. Row after Dera chief gets 3-week furlough. You expected this Dera Sacha Sada got to vote for the BJP. Punjab police on their toes as state gears up for PM's visit. Preeti Patel accused of smearing Sikhs in speech. US think tank. BSF seizes RDX IED supply from Pakistan dropped by drone in Punjab. BJP accuses Congress of falsely linking Sikh turbans to hijab controversy. Unkept Congress promises fuel Malwa anger as it warms up to the new, which is up. Congress MLA to stage overnight stir in the House. Government blames Nehru, doesn't admit mistakes. Manmohan, BJP hits back. Center, BJP tried to defame Punjab. Punjabiyat says MMS, and that's rightly so. Ex-Law Minister Ashwini quits Congress party, doesn't reflect national mood. Ashwini ji is out on the cold, folks. Just don't worry about it. Amranda replaced as his government was ruled by BJP from Delhi, says Priyanka. She may not be right, but what's happening here, right? Captain's wife, a Congress MP, roots for BJP alliance. Kind of strange why she's not quit and why Congress has not thrown them out. Sidhu declines to address Priyanka's rally in Sangrur. Sidhu's hopes crush Channi's Congress CM face. So, Sidhu, let's see what happens there. He's in a tough fight. Man they call terrorist has built 12,000 classrooms. Says CM, so has Hafiz. Somebody tell him that so has Hafiz Ali, the head of LET. 4 killed for links with Khalistan groups. Arms recovered, says cops. This is in Haryana. It's all about, folks, Khalistan all over again. With probe up SFG link Shah to Channi, Kejriwal trashes claims. Invoking its Delhi model, up goes for ek mauka Kejriwal nu. मैं तो ਇਹ ਕਹਿਣਾ केजरीवाल दिल्ली का कोई मॉडल नहीं है। दिल्ली का मॉडल वही सत्यानाश है जिस तरह का गुजरात मॉडल है, कुछ नहीं है। Aligning with BJP good, Punjab can't run without a national party. I get it,
But does he get it? Does he get it that the party he's tied up with is just the wrong party? And if it was going to give anything, it should have immediately talked about mafuing all the loans, right? Channi's agenda is divisive, says Modi. Khattar visit to Punjab called off. Shah promises to make Punjab drug-free if BJP voted to power. He is the sole controller of drugs, folks. How is he going to make it free? He runs on them, right? Shah questions Channi credibility on PM route row. Shah captain raised national security at NDA rally. He's not being able to look after folks Kashmir. What's he going to do with Punjab? I don't know. Sops, barbs galore as Punjab election campaign concludes. Will waive debt of farmers, BJP allies in Punjab. Well, right now they have nothing out there, folks. They are flying a kite, but the Captain Saab has allowed these guys in, and Punjab may live to regret it. प्रेस के लिए जो है, और मेरे ख्याल से ये लोअर साइड है, जैसा कि अभी एक सज्जन ने बताया, अभी ये आंकड़े आपके जो है ऊपर जाएंगे, क्योंकि जहां तक अकाली दल गठबंधन की बात है बसपा के साथ, तो एक दलित चेहरा जो है या दलित मुख्यमंत्री का जो है नाम घोषित कर देने के बाद जो है वो एक स्विंग मुझे लगता है कि कांग्रेस को और मिलेगी। और आप आपको जो इस बार हम लोग 30 से 32 सीट दिखाई जा रही है, तो जब पिछली बार 57-58 सीटें उनको दिखाई जा रही थी, उसके बाद उनकी स्थिति जाके 20-22 पे अटकी थी। तो अभी अगर ये 30 और 32 की एरिया, क्योंकि जो भी उनकी मजबूती है वो सिर्फ मालवा के क्षेत्र में है, तो मुझे लगता है कि ठीक है वो मालवा में अच्छा करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे। 69 में से अगर ये 30 है तो इसमें से हो सकता है 20-25 सीटें वहीं से आए, और बाकी जगह से 2-4 सीटें ही आने की उम्मीद दिख रही है। इसलिए मुझे जो ये आंकड़े आज के आंकड़े में जो दिख रहा है, उसमें आपकी पोजीशन जो 30-32 है वो सही दिख रही, लेकिन जो अकाली गठबंधन है वो 17 से 19 तक रहेगा, मुझे उम्मीद बहुत कम है। ये इसका इसमें जो भी लॉस जाएगा वो सारा जाके कांग्रेस में जुड़ना है। और रही बीजेपी की बात, तो 1 से 3 की क्या, हमने आपको याद होगा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे तो उसके बाद वो तो बहुत तेजी से चढ़े, और उसके बाद लेकिन जब संगठन नहीं रह गया उनके पास, तो उनके जो है कोई नामलेवा भी नहीं बचा था। तो वही हालत जो है इस समय बीजेपी प्लस की भी है, कि जब अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस छोड़ के गए हैं और वहां बीजेपी का दामन थामे हैं, तो ये 1 से 3 क्या, वो उसको 0 ही मान के चलिए, और ये सारा कुछ मुझे जो है कांग्रेस में ही जुड़ता दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि चन्नी के मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के बाद, और जिस तरह से घोषित किया गया, वहाँ नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, सुनील जाखड़ भी थे, और हाथ उठा करके जिस तरह से उन्होंने उनका ये किया, उससे लगता है कि हमको इसमें से सीटें और बढ़ेंगी, 70 के आसपास भी सीटें जा सकती हैं। नहीं गई है। कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी बन रही थी ज़बरदस्त, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से अलग होने के साथ ही कांग्रेस को उससे मुक्ति मिल गई। अब आप देखिए हालत अमरिंदर सिंह जी की क्या हो गई है कि कांग्रेस छोड़ करके जो उनके करीबी विधायक थे वो उनकी पार्टी में नहीं गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में गए। किस लिए गए? हो सकता है बीजेपी थोड़ा पैसे से मदद करेगी ज़्यादा ढंग से, या प्रशासन का भी कुछ लाभ, थोड़ा केंद्रीय प्रशासन का लाभ उसको शायद कुछ मिल जाए तो अलग बात है। लेकिन अमरिंदर सिंह की लोकप्रियता इस हद तक नीचे चली गई कि उनके साथ कोई गया नहीं। और सबसे बड़ी बात जिसको शिविंदर So in conclusion, you have these. Modi hosts Sikh leader, says country wasn't born in 1947. Modi meets prominent Sikh leaders. The Sikh leaders shouldn't forget the treatment of Sikhs in Gujarat. Terrible. There's an article whose site I'm going to put on my video on the site. And secondly, hey, he's been calling them Khalistanis and all kinds of names. And this is what we have. Goodbye stability. The cracks are back in Punjab politics. Finally, ground reports clearly indicate that cracks have appeared in Punjab's social and political arrangement of the past. The new government, along with the opposition, must not overlook this new reality. They must show a large heart in accommodating the aspirations of their electoral adversaries, else the state can spiral back to social and political turmoil. That is absolutely right. And then you have this. In Punjab, a fierce contest is on the cards. The election is perhaps the first when the power of Dalit voter is in front and center. The single biggest issue of farm laws has morphed into questions of agrarian distress and unsteady incomes. And both contenders, the Congress and AAP, are vying to be the ultimate armed army. The Ravidas identity is playing up because of Channi. The Punjab Assembly polls was postponed to accommodate Guru Ravidas Jayanti. What is the celebration that brings the community to Varanasi on Begumpuru Express and by other means this time of every year? And then you have, in conclusion, something that even Vinod Sharma writes. Poll trickier after final lap. He says, only the people's native wisdom can save the state from the rush for political power that could trample its future and that of its poor and the youth who are jobless and without hope. And that's what I see, the darkness in this JV that has happened. I'm not sure why, what was the compulsions, but you've provided a monster to get into that state. Jai Hind. Watch out, let's all beware.